हाय, मैं हूँ राज शमानी और यहाँ पर हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स को लेके आते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। डिड यू हैव टू गो थ्रू द फेजेस ऑफ कि फैमिली से बात करूँ, भाई से बात करूँ, मॉम डैड, लाइक हाउ नहीं, व्हाट वाज द वो तो एक ऑर्गेनिक मीटिंग होती ना, अच्छा। उसमें हमारी बड़ी फटी थी भाई। क्या किससे ज़्यादा डर लग रहा था कि भाई से कि मॉम डैड से कि क्या था सीन? यार नर्वसनेस तो सबसे ज्यादा मॉम डैड से मिलने में ही होती है, और उनके घर में तो एक तो छोड़ो, सभी चैंपियन है, सभी सुपरस्टार है। तो वैसे स्ट्रेस में था, बोला एक से खत्म नहीं, दो नहीं, तीन, सभी है। और टाइगर पटौदी के तो हम बचपन से फैन हैं, और शर्मिला जी के भी हैं, सलमान भाई अपना सैफ भाई के भी हैं। एंड आई रिमेंबर सलमान भाई का नाम क्यों आया, क्योंकि हम द फर्स्ट टाइम आई मेट सैफ भाई वाज वी यूज्ड टू गो टू प्ले पूल एट अ फ्रेंड्स प्लेस। ओके, पूल। हाँ, ओके। और भाई और उनके एक दोस्त साथ आए थे, और हमारी मीटिंग पूल खेलते खेलते हुई थी। और जो सबसे पहली बात उन्होंने नोटिस की थी, बोले यू गॉट गुड बाइसेप्स। तो मैं कहा यार ये अच्छा ऑब्जर्वेशन भी है, ये तो मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं। बट आई रिमेंबर ही वाज द कूलेस्ट पर्सन। ये सैफ भाई ने बोला था? हाँ, and he repeated that to Suha. So when I asked her, I said, I mean, I think he's pretty cool, but you know, it didn't go like as I thought कि oh, what are your intentions के लिए तो बहुत ही जल्दी थी वैसे भी, but he just chilled with us, and he's just such a nice person in general, because even till date, and I've spent so much time with him, we don't necessarily, actually hardly will ever talk about films as such. He's got vivid interests, and he wants to know what you're interested in, and he'll talk about all of those. So we got pretty competitive. We played about 4-5 games, and it was more about winning that game, and then the chats were about fitness and travel and stuff like that. So I really enjoyed it. But मैंने फिर उसको ये पूछा, मैं बोला यार हमने तो मतलब, it was like hanging out with any friend. How did it go? He said you have good biceps. I said, oh, he said that to me also. So that's something that's common. He still says that from time to time. But that was that, and I remember the most intimidating was meeting Amma, Suha's mom. That was also pretty cool, but I was just intimidated anyways, even though he was very sweet. Because I remember Amma didn't make eye contact with me for the longest time. Her questions were not directed at me. So what do you do? Looking at the magazine, and I've answered, oh, I see. And you've been doing this for a very long time? Yes. But that was the first meeting. Second meeting, I got eye contact, and then we became really cool. Yeah, I remember we were holidaying in London once, and she loves to cook, I love to cook, so we ended up cooking together and eating together. So we bonded really well after that. But I remember the first meeting I was pretty intimidated because like तो eye contact भी नहीं कर रहे. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।